So let us discuss one problem on Bode plot. So the thing is that the question is for the system having the open loop transfer function g into h 10 upon s, s plus 1, s plus 2 determine, we need to determine the stability of the Bode plot of the system, right? So first of all, we need to observe that this gh, right, is this in the standard form? No. So this is not in the standard form. What is the standard form? We want all the terms as 1 plus s into something, right? So here it is. What we will do, we will just take 10 common from this term, because this is not in the form of 1 plus s into something. So if I will take 10 common from this term, it will be 1 plus s by 10. Then this 10 will get cancelled. So this is the standard form, from where we need to transfer it to frequency domain by replacing s by j omega. So we have replaced, wherever s is there, we are replaced by j omega, right? And then we will observe that, okay, in the given transfer function, right, in the frequency domain transfer function, there is 1 upon j omega, means what? There is one pole at origin, and then 1 upon 1 plus j omega. This is one more first order pole, and this is 1 upon 1 plus j omega by 10. So this is one more first order pole. So now we know how to calculate the magnitude of first order pole, how to calculate the phase of the first order pole, right? But before that, we have seen that the standard case we have discussed, that it is 1 upon 1 plus st, right? So we can refer it. So here, from here, you have equated omega t is equal to 1. So omega was equal to 1 by t. That was your frequency, breakover frequency. So here also the breakover frequency p is equal to 1 by 1. That is t is equal to 1 by 1 here, right? So, or we can say crossover frequency. So omega crossover, omega c1 is equal to 10, right? And similarly here omega t is equal to 1. So therefore, so here the t is nothing but 10. So here we can say that omega crossover frequency is 10. Okay, so we can find the crossover frequencies, or just simply the denominator of omega will be the crossover frequency. Simply here denominator of omega is what? 1. So hence it is crossover frequency is 1. Here the denominator of omega is 10. So crossover frequency is 10 in simple language. Now see here, what we will do, we will just do the preparation. What we will do, we have the 3 factors. 1 upon डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है, तो पहला है आपका 1 अपॉन जे ओमेगा, दूसरा पोल है आपका 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा, तीसरा है आपका 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा बाय 10. तो इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? सो इट विल बी -20 dB, राइट? सो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा -20 dB. देन इसका क्या रहेगा आपका? फिर से -20 dB रहेगा, और इसका भी -20 dB ही रहेगा, बिकॉज ऑल दीज आर फर्स्ट ऑर्डर पोल्स, राइट? नाउ सी हियर, passing through, this is passing through, you just replace omega is equal to, this will pass through 0 and 1, right? Now for this, whenever omega is less than 1, the magnitude will be 0 dB. Whenever omega is greater than 1, the magnitude is -20 dB. हमने पहले देखा था, राइट? आपको एक बार रेफरेंस दे देता हूँ मैं, कहाँ पर देखा था. So we are discussing the case where all the plots are like this. बराबर है? Yeah. So we have discussed this case. This was 1 upon 1 plus. This was the case, right? So 1 upon 1 plus j omega t. So हमने इसमें देखा था कि क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आएगी, वी हैव ब्रेक फ्रीक्वेंसी आएगी, ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 को इक्वेट करेंगे तो फिर ओमेगा का वैल्यू आएगा 1 बाई टी. सो 1 बाई टी इज नथिंग बट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और ब्रेक फ्रीक्वेंसी देखा था. और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? जब ओमेगा 0 रहेगा तो मैग्नीट्यूड विल बी 0, एंड आफ्टर 1, राइट, द मैग्नीट्यूड विल बी -20 log ऑफ ओमेगा टी, और यू कैन से -20 dB. ओके, और इसका ग्राफ भी हमने रेफरेंस में देख लिया था कि पहले क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी तक, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई टी तक आपका मैग्नीट्यूड रहेगा 0, और उसके बाद में -20 dB रहेगा, राइट? सो सेम कंसेप्ट आई एम यूजिंग इन द प्रॉब्लम. लेट अस सी. सो वी वेयर टिल दिस पॉइंट. हमने क्या किया? हमने ये निकाल दिया इसका क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज, एंड देन योर फर्स्ट फैक्टर, राइट? सो 1 अपॉन जे ओमेगा. सो 0 से लेकर जब तक 1 नहीं आता है तब तक आपका स्लोप कितना रहेगा? -20 dB, राइट? एंड व्हाट विल बी द फेज एंगल? फेज एंगल इज -90 degrees. ओके, देन दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा. तो इसमें क्या आएगा? पहले ओमेगा, व्हेन ओमेगा इज लेस देन 1, इसका स्लोप रहेगा 0 dB, right? And after omega is equal to 1, the slope will become
-20 डिग्री, राइट। सो सीधा यहाँ पर फोल्ड है ना, तो फोल्ड में सीधा स्लोप आएगा factors of 20, so it will be -20 or -40 or -60, so here it is -20, right, because single pole. अगर मल्टीपल पोल्स, रिपीटेड पोल्स मीन्स हमने केस देखा था 1/s⁻k वाला, तो उस केस में अगर k का वैल्यू 2 है तो -43 है तो -60, राइट। तो इसमें s का पावर है ही नहीं, मतलब 1/j ओमेगा रेज़ टू 1, so that's why it is -20 into 1, the slope is -20 degree initially, right। देन इसका स्लोप क्या रहेगा, 0 ओमेगा इज इक्वल टू 1 तक रहेगा 0 डिग्री, राइट। और उसके बाद में स्लोप क्या रहेगा -20 डिग्री पर डिकेड, और इसका एंगल क्या रहेगा माइनस, देखिए डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, सो phi is equal to -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 1, दैट इज tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। एंड सिमिलरली इसको भी हम देखेंगे, तो इसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, इसका है 10, राइट। सो जब 10 से नीचे है तो इसका स्लोप क्या रहेगा 0 डिग्री, और जब 10 के बाद में जाएगा ओमेगा का वैल्यू तो इसका स्लोप आएगा -20 डिग्री, राइट। सो ये तो इंडिविजुअल एनालिसिस हो गया, अभी हमें तो चाहिए किसका एनालिसिस, कंबाइंड एनालिसिस, राइट। सो द कंबाइंड एनालिसिस इज लाइक ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। सो सी हियर, जब 1/j ओमेगा, सो इसका रिजल्टेंट स्लोप, रिजल्टेंट मतलब टोटल स्लोप, टोटल मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 1 है, सो स्टार्टिंग से लेके 0 से लेके 1 तक स्लोप कितना रहेगा -20, राइट। यहाँ पर 1 के नीचे स्लोप क्या रहेगा 0, राइट, और यहाँ पर 10 के नीचे स्लोप क्या रहेगा 0। सो अगर हम 1 के नीचे स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो इसका -20, इसका 0, सो रिजल्टेंट कितना आया -20, राइट। सो 0 से लेकर माइनस पहला कट ऑफ पॉइंट, राइट, 0 मतलब आई विल नॉट टेक एग्जैक्टली 0, आई विल टेक अ नियरर वैल्यू, सो लेट अस से 0.01, 0.01 से लेकर 1 तक स्लोप रिजल्टेंट कितना -20 डिग्री। फिर 1 से लेकर 10 तक कितना स्लोप है, तो जितना स्लोप है उतना ऐड करते जाओ आप, राइट। पहले कितना था स्लोप -20, उसके बाद में कितना हो गया -20, सो इट विल बी -40 डिग्रीज, राइट, फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, फ्रॉम 1 to 10, राइट। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 के आगे स्लोप क्या है, 1 के आगे और 10 के नीचे, 10 के नीचे तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 के आगे इतना -20, और पहले का तो कंटिन्यू होगा। सो एक सिंपल फंडा बताता हूँ कि वेन एवर द स्लोप्स आर देयर, जब -20 आ गया, अभी रिजल्टेंट क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया फिर से -20, तो -20 विल बिकम -40, सो द स्लोप विल बी -40 फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू 1 to 10, राइट। फिर उसके बाद में फिर से यहाँ पर 10 के बाद में स्लोप कितना है -20, पहले 10 तक कितना था -40 प्लस -60, सो इट विल बी -20, सो इट विल बी -60 डिग्रीज पर डिकेड। सो आगे देखिए ओमेगा C2 इज इक्वल टू 10 से लेकर इंफिनिटी तक स्लोप कितना रहेगा -60 डिग्री पर डिकेड रहेगा, राइट। सो दिस इज योर स्लोप, ओके। एंड देन फेज इज सिंपल, राइट। सो फेज का देखिए स्लोप का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन होता है, बट वी आर टेकिंग magnitude in dB, so it will get added, right। So hence we are adding the slope। Similarly angles का क्या होगा, angles का भी एडिशन होगा। so पहला एंगल था आपका 90, दूसरा था -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, एंड तीसरा था -tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 10। so your resultant angle of the system will be -90 degrees plus -tan इनवर्स ओमेगा प्लस -tan इनवर्स ओमेगा बाय 10। और फिर हमें क्या करना है, we will vary the omega from let us say 0 to 1000, right। so let us vary the omega from 0.01 से लेकर तो 1000 तक कुछ इंटरवल्स ले लीजिए आप आपके हिसाब से, एंड देन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू, राइट, फाई ऑफ ओमेगा। पहले हम लेंगे इसका एंगल तो हमेशा -90 आएगा, इसका एंगल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, दिस विल बी इन रेडियंस, जस्ट पुट इट, सॉरी, so put the value of omega, and whatever angles you will get, write it in degrees, right। all the angles I am writing in degrees, and then you just add all the three angles, iska angle plus iska angle plus iska angle, so all the angles you will add, so you will get some resultant value of phi, right। so now it is very simple to plot the graph of omega versus this phase angle, okay। so for that we will use the logarithmic graph, okay। so like this, so resultant angle क्या रहेगा, so let us say that this is okay, if you observe our angle varies from -90 से -360 तक, so I will take always the reference axis will be -180 degrees, right, and then I will take
this scale as 150, 120, 30 degrees का difference, minus 90, minus 20, minus 150, minus 180, and then I will plot the graphs, right? So when omega is equal to let us say 0.05 हमने पहला वैल्यू लिया था तो उसका आया था कुछ 89, तो यहाँ पर कुछ तो क्या आएगा। देन 0.1 के लिए हमारा एंगल क्या आया था, 0.1 के लिए 0.1 it was minus 95.57. So we have plotted this second value minus 95.57. Then omega c is equal to 1. When omega c was equal to 1 at that time was what was the angle? Yeah, for 1 the angle was minus 140 degrees. So फिर हमने क्या किया, minus 150 यहाँ पर है तो minus 140 just above रहेगा, so हमने ये plot कर दिया minus 140 degrees पे. And similarly I will plot the points and then I will join all the points so that I will get the graph of omega versus angle, right? Now carefully if you see, this is your logarithmic plot. So as explained, this is called as 1 decade, right? So अगर मैं 0.01 से चालू करूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगा, multiplied by 10, so it will be 0.1, multiplied by 10 it will be 1, multiplied by 10 it will be 10, 10 into 10 100, and then it is 100, right? So ये मैंने logarithmic graph plot कर दिया है, right? And phase angle, and then I have just drawn this graph. So this is your phase plot, right? इसको बोलेंगे हम phase plot. Okay. Now for magnitude plot, I will just explain the magnitude plot using, okay, what I will do, I will plot the phase plot like